ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ कर्नाटका पीपल कन्नड़ जनते कन्नड़दವರು वो लोग पूरे दुनिया को लेके जाके बोल रहा है कि नॉन कनाडिक्स को बोल के एक ऐसा फिल्म आया है उतना प्राउड फील कर रहा है। हर बार मैं एक बोल के जाता हूँ, मैं एक आई बिलीव मोर रीजनल इज मोर यूनिवर्सल। एक डांस नंबर, एक फाइट और कुछ भी हम लोग किया तो वो देखने के लिए बहुत सारा प्लेटफॉर्म्स में है, बहुत सारा फिल्म में मिलता है। वो कुछ नया नहीं है अभी, ठीक है। किसी को हर्ट करके और एक टॉपिक और एक पॉइंट बनाना में मुझे मजा नहीं आता है, ठीक है। सो वो जो सेंटिमेंट्स है उसके बारे में बहुत सारा पॉइंट ऑफ व्यूज है, पर्सपेक्टिव्स है, जो अपर कम्युनिटी, लोअर कम्युनिटी, हमारे जो सिस्टम है, ये सब, ये जो कल्चर, जो हमारा ट्रेडिशन जो है, वो सब हम लोग भूल के जा रहे हैं, हम निगलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा ऐसा चल रहा है। सो इसलिए एक शिवा का कैरेक्टर उसमें उतना रेज है, और उसका लव स्टोरी भी वैसा ही एक रॉ लव स्टोरी है, नॉट लाइक बॉलीवुड सॉन्ग जैसा नहीं है। Hi, this is Bhavna and you're watching India Today. I have the cast of the divine blockbuster that you are perhaps witnessing or are booking your tickets for, which is called Kantara. And I have the cast, the writer, director and the actor Rishab Shetty, and of course Shaptami with me on India Today. Firstly, welcome. Thank you. A huge congratulations. Thank you. No one, I think, was expecting. Suddenly, all I'm hearing and watching and seeing on social media is Kantara, which has made me curious, and I'm sure a lot of other people as well in the Hindi belt about this film. Were you expecting the kind of response that you are getting at this point? No. Also, just adding, it is going to cross 100 crore very soon. Were you expecting that at all? नहीं, होमबाड़े फिल्म्स विजय किरगंदूर कभी नंबर नहीं बोलते, ठीक है। कितना हुआ है, क्या कर रहा है, वो सब नहीं करते। एंड थैंक यू सो मच भावना, आपने कहा ना एक डिवाइन ब्लॉकबस्टर, वो जो डिवाइन, जो स्पिरिट, जो एनर्जी था, वो एनर्जी शायद आज इतना बड़ा दुनिया के सामने लेके जाके कांतारा को बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर बनाया। एंड डेफिनेटली कर्नाटका पीपल, कन्नड़ जनते कन्नड़दವರು वो लोग पूरे दुनिया को लेके जाके बोल रहा है कि नॉन कनाडिक्स को बोल के एक ऐसा फिल्म आया है, उतना प्राउड फील कर रहा है। आई थिंक वो एनर्जी शायद इतना बड़ा सक्सेस है। For you, what was, I mean, when did you even realize that the film is actually reaching out to a lot of people and they're loving it? So I don't think we've digested the fact that it's been doing that still. Yeah. So it's not hit us yet. We're just happy. We wake up in the morning, we look at it. Okay, we're just happy that the movie that we made with so much love is reaching this, this audience. Firstly, I mean, that's the reason we thank our Kannada audience, because a lot of them in Karnataka, word of mouth is what we say, right? So Auru, they took all of them, their friends, their non-Kannadiga friends, and said, come, we'll show you our culture, we'll show you our traditions, and I think you should watch this movie. So we thank our Kannada audience. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. And not only that, here in Mumbai, we're getting such great reviews. I mean, it hits us a little bit when we open Twitter, I think. We look at Twitter and then people are talking about it. It makes us proud. When our family is proud of us, it makes us proud. But other than that, I don't think anything internally for us, it's changed much. We're just happy. You know, like you said, in fact, a friend of mine who's also a Kannadika, and I just met her 2 days back, and she's like, if you've not watched this movie, you've not watched anything. You know, and the fact that... See, we love our Kannadigas. And also, you know, the fact that it stems, I mean, she was very proud that her culture was perhaps portrayed for the first time in such a magnificent way. Yeah. Was that the idea behind Kantara in the first place? Definitely. मैं एक कहानी एक इंसिडेंट से शुरू हुआ था, जो एक फॉरेस्ट ऑफिसर एक गांव का एक बंदे के बीच में हुआ था. That was a real thing. So that scene is also there in the film. Yeah. Okay. So not exactly,
you'll get to know that action, ठीक है. वो कहानी में डेवलप करने समय में मुझे लगा कि मैं इधर जो कोस्टल कर्नाटका का एक भूमि के बारे में, लैंड के बारे में मैं कहानी बताने जा रहा हूँ. वो भी डेवलप होते होते मुझे लगा कि मैं इसमें फोर्स नहीं करना है, ये ऐसा पैटर्न में होना चाहिए, ऐसा इधर ये चाहिए वो चाहिए, नहीं, इस ये फ्लो में मैं भी ये फ्लो में जाता हूँ, ऐसा सोचता. उस समय मुझे लगा कि हम एड्रेस करने के लिए एक बहुत अच्छा कॉन्फ्लिक्ट मिला. एक मनुष्य और प्रकृति के बीच में जो संघर्ष है, वो आज का जो ऑडियंस को हम बताने जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा लगेगा. इसमें हम कैसे बोलते हैं, कैसे ये प्रेजेंट करते हैं, थ्रू आवर ट्रेडिशन, थ्रू आवर बिलीफ. हम जो डेमी गॉड कहते हैं, कॉल्ड दैव आराधने इन कन्नड़ा. सो कोला कहते हैं, कोला मतलब भूत कोला कहते हैं. I have to ask you about that, but that is called demigod. Okay. That there is an energy in the nature. So वो energy एक आदमी के अंदर ट्रांसफॉर्म होके वो आपको, इट्स लाइक हमारे जो गांव और ये सब हम बिलीव करते हैं ना उधर, दैट इज अ फाइनल स्टेटमेंट, इट्स लाइक अ वर्डिक्ट. ओके, सो उतना मानते हैं हम लोग. सो मैं भी वैसा एक मानने वाला फैमिली से आया हूँ. सो आई थॉट ये इतना रूटेड, हर बार मैं एक बोल के जाता हूँ, एक आई बिलीव मोर रीजनल इज मोर यूनिवर्सल. सो ये जो सेंटिमेंट्स, ये रिचुअल्स, ये बिलीव, ये सब सिर्फ कोस्टल कर्नाटक में नहीं, पूरे भारत में है. पूरे इंडिया में हर कोने कोने में, हर गांव में हम लोग दूसरे तरीके से, दूसरे प्रकार से हम लोग मानते हैं ये सब. सो इट्स लाइक अ प्रॉपर इंडियन सेंटिमेंट हम बोलने जा रहे हैं. और आज हम लोग जो पुराने जमाने से हमारा ट्रेडिशन जो है वो हम वापस रिकॉल कर रहे हैं. उसका जो प्रोमिनेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो आज का जो जनरेशन को समझ में आना चाहिए, उन लोगों को पता ना होगा ये सब. ये थॉट था कांतारा के बीच. And you know, it's connecting. I mean, if you see, and I'm not just talking about Kantara, in the last 6 months, the kind of movies that has worked are all rooted in Indian traditions. I mean, be it RRR or be it PS1 also, I mean, it's doing great. Brahmastra again, it is all rooted in Indian tradition. So is that the way forward, do you think? Because you're also a writer, you're also a director, you're also an actor. So is that a way forward according to you? मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ. I'm not a good reader. I won't study much. So मैं दुनिया को देखता हूँ, लोग के बीच में जो क्या हो रहा है, आज का ज़माना कैसे चल रहा है, सो हमारा लाइफ कैसे चल रहा है. सो ये सब सोसाइटी को मैं अच्छी तरीके से देखता हूँ. सो वैसा जो सोसाइटी में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सब लेके आने के लिए बोलता हूँ, लेके आने के लिए मैं ट्राई करता हूँ. ठीक है, ये कांतारा शुरू होता है 18th सेंचुरी में. 18th सेंचुरी से शुरू होके 1970 से 70s में कुछ स्टोरी बताते हैं हम लोग. उसके बाद 1990s में मेजर स्टोरी प्लॉट है. सो इट्स लाइक अ फोकलोर. सो लोग और एक जनरेशन को बोलते हैं कि ऐसा ऐसा चला हो गया, ऐसे ऐसे होता. सो नेक्स्ट जनरेशन को ये लोग लेके जाते हैं वो स्टोरी, उसमें जो क्या क्या है, उसमें हमको क्या मिलता है. करेक्ट. so ये सब ऐसा जाते रहे चल रहा है. सो ये मुझे बोलना था थ्रू फोकलोर. So you feel that eventually that is the sentiment that is definitely connecting to the भारत में हर जगह एक भारतीय को वो सेंटिमेंट्स का इम्पोर्टेंस पता है. so इसलिए रूटेड स्टोरीज ज्यादा कनेक्ट होते हैं लोगों को. दूसरा जो स्टोरीज है, एक डांस नंबर, एक फाइट और कुछ भी हम लोग किया, तो वो देखने के लिए बहुत सारा प्लेटफॉर्म्स में है, बहुत सारा फिल्म में मिलता है. वो कुछ नया नहीं है अभी, बहुत साल से वैसा वो भी एक सही तरीका है. एक कमर्शियल फिल्म विद द मास एलिमेंट्स और एंटरटेनमेंट वो भी है. वैसा फिल्म देखने वाले लोग भी है. लेकिन ज्यादा अभी वो थोड़ा ज्यादा हो गया. अभी लोगों को रूटेड स्टोरी चाहिए. उन लोगों को समझ में आया कि ये हमारा स्टोरी है, हमको जो ये कनेक्ट हो रहा है, ये हमारा गांव में भी ऐसा है, हमारा प्रदेश में ऐसा ही है. वो सब कनेक्ट होना चाहिए. वो कनेक्ट हुआ तो Kantara जैसा बनेगा. I think so, and I also believe that is the way forward. Like you said, the more rooted we are, the more universal it is going to get. But to you, Shaptami, I want to understand, because see, Shiva, I want to come to, of course, because it's such a complex character in itself, and you play, like you also play a father at one point. So of course, it's a very
बहुत टाइम लगेगा उसको डिकोड करने में. But to you, how did you approach Leela? Because she's also, I mean, you know, we see a different arc to her. While she is supporting Shiva in a lot of ways, she has her own character. How did you approach it when you were like, you know, approached for it? So Leela's character has got a lot of space for performance, and she has her own stands and she has her own personal conflicts hai usme. In the sense, we've done a workshop on my characterization. So how to pick, how I had to take out Shaptami as a whole and get into the character of Leela. So we did a workshop for about 2.5 months. Okay. On the language, on a characterization and everything. But when you look at the characterization on screen, firstly it was written in such a way that it has a big graph. So, right. she's the kind of character who expresses herself with the people she trusts the most. Otherwise, all her talking is in her eyes. She expresses a lot through her eyes. without saying anything much. That I feel is the most difficult thing to do. By Thank you. So I had to work on that, but probably the workshops that I did earlier helped me during the shooting process. But the character graph, you'll see different Leela during different stages of the movie. But Rishab, I want to understand, because your character is, like I said, very complex. Now, you've also written the story, right? And you have very, very neatly blended the casteism also. You've shown it very nicely. How much care did you take to make sure that nothing is misrepresented? Because there is always a chance of things being taken in a certain way by the audience, right? So how much care did you take to ensure that no one is hurt? वही मैं बोल रहा था ना, अभी मैं दुनिया को देखता हूँ, मैं सोसाइटी को देखता हूँ, सोसाइटी के साथ हूँ मैं. इधर जो कास्ट सिस्टम, मतलब कम्युनिटी, अपर कम्युनिटी, लोअर कम्युनिटी, जो ये सब लोगों के साथ मिला हूँ मैं. जो सब लोगों के साथ मेरा दोस्त भी है, उन लोगों का लाइफ में मैं नज़दीक से देखा था मैं. सो मुझे फिल्म बनाना है, आई एम ए स्टोरी टेलर, आई वांट टू टेल ए स्टोरी. वो किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है? हम कुछ भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं उसमें. सो क्योंकि ये एंटरटेनमेंट मीडियम है, सिनेमा देख के लोग खुश होके आना चाहिए, ठीक है? किसी को हर्ट करके और एक टॉपिक और एक पॉइंट बनाना में मुझे मज़ा नहीं आता है, ठीक है? सो वो जो सेंटिमेंट्स है उसके बारे में बहुत सारा पॉइंट ऑफ व्यूज है, पर्सपेक्टिव्स है, जो अपर कम्युनिटी, लोअर कम्युनिटी, हमारे जो सिस्टम है ये सब. लेकिन मैं मानता हूँ हमारा जो ये दैवाराधने बोलते हैं ना, ये है सोसाइटी, समाज में एक समानता लेके आती है. सबको, वो आपको क्लाइमैक्स में देखने मिलता है फिल्म में. जो दैव सोसाइटी को क्या मैसेज देता है, right? It's a bridge between nature and human. Okay. So that is our culture, that is our roots, that is our Indian sentiment, I think. So ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा. ठीक है? So that was the theme. There will be one shot in the climax. You will feel that. Picture देख के आप मुझे बोलिए. मैं अभी No, but I'm sure. No, I mean, to whoever has watched the film, they obviously were not offended even 1 cent. But that also kudos to you for writing it in that way. एक फिल्म में, एक कहानी में हम पॉजिटिविटी स्प्रेड करना है. True. ठीक है? वो फिल्म बना के किसी को हर्ट करके वो मुझे नहीं चलेगा वो, ठीक है? सो एक पॉजिटिविटी देना चाहिए सोसाइटी को. सो वो पॉजिटिवनेस इसमें है. That's why it's called divine. Yeah, definitely. So that positivity अभी लोग देख के बता रहे हैं, ओके ठीक है? ये so कुछ लोग बोलते हैं अभी नहीं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, सरकार ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, क्वेश्चन करके जा रहा है. नहीं, लोग ऐसा कर रहे हैं, लोग ऐसे, दूसरे लोग वो क्वेश्चन करते हैं. सो मैं सोचा था कि ठीक है यार, वो तो चल रहे बाहर, ठीक है? अगर हम लोग इधर सब हम लोग मिलके सब एक है, एक समानता आना चाहिए. सो समाज में सब लोग एक तरीके से एक हंत में आके सब लोग मिल के हम लोग ये कर रहे हैं. So that's a very positive and good way to look at it. Yeah, but I have to also congratulate you on that Bhuta Kola dance. Am I pronouncing it right? Yeah, दैवाराधने Bhuta Kola ऐसा. Bhuta Kola dance. Because मेरी फ्रेंड ने वो थोड़ा सा शूट करके मुझे दिखाया है, वो उतना पार्ट तो वो उन्होंने मुझे दिखाया है. हाँ, piracy. No, I mean just
only because she was really like dressing, of course. But she showed me a bit of it, and I was blown away by the duality that you show on screen. I mean, we look at you as Shiva, and then we look at you performing in that costume. What was your process like? Because I cannot even imagine how you did that. Shiva is a representative of today's generation. जो हम लोग हमारा जो भारतीय जो कल्चर जो हमारा ट्रेडिशन जो है वो सब हम लोग भूल के जा रहे हैं, हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ऐसा चल रहा है. सो इसलिए एक शिवा का कैरेक्टर उसमें उतना रेज है, उसका लव स्टोरी भी वैसा ही एक रॉ लव स्टोरी है, नॉट लाइक बॉलीवुड सॉन्ग जैसा नहीं है. कलरफुल नहीं है, ठीक है, उसका इंटेंशन भी ठीक नहीं है. वो एक हम लोग दैव नर्तक बोलते हैं, दैव नर्तक का वो जो फैमिली का ये है, इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी इसका बाप के बाद ये करना होगा, वो सब प्रैक्टिसेस. लेकिन ये उल्टा जा रहा है. करेक्ट. ठीक है, सो ये उल्टा जा रहा है. लेकिन उसका जो शिवा का जो बाप का कैरेक्टर में अन्नप्पा बोलते हैं उसको, जो वो कैरेक्टर में किया था उस समय दूसरा एक थॉट प्रोसेस में था मैं. वही मुझे जानना है. वो मैं बता नहीं सकता. नो कमेंट्स मैं नहीं लेने वाली हूं. आई डोंट टेल एवरीवन जो एक्सपीरियंस हो गया मुझे, जो क्लाइमैक्स में या पहला शुरू में जो कोला हम लोग दिखाते हैं, उधर कुछ एक्सपीरियंस जो मुझे हुआ था वो मैं सेल्फिशली मेरा अंदर रख के मैं वो एक्सपीरियंस करता हूँ. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट, क्योंकि दैट शुड नॉट बी द पब्लिसिटी गिमिक, और लोगों को ऐसा हो गया बोल के आई डोंट वांट टू स्पॉइल, बिकॉज मैं इतना मानता हूँ ये हमारा जो दैव है, हम लोग पालते हैं, मानते हैं. सो दैट इज आवर वे ऑफ लाइफ, इट्स आवर कल्चर. वी शुड नॉट ये किया मैम. Okay, I'm not going to push you if you don't want to share about that. But also, while there's a lot of love that is coming, there's also a small section. I think there's one scene where Shiva is pinching Leela's waist, which has not gone very well with a few sections. I wanted to understand, how do you want to respond to that? वही तो बोल रहा था ना मैं, शिवा ऐसा आदमी है. मतलब वो उसको इतना नेगेटिविटी है उसमें, वही में he is like a villain. वो he is not a typical hero. ये आदमी है, मनुष्य है. सो वो एक फिल्मों में दिखाते हैं ना, वैसा हीरो जैसा नहीं है. He's flawed. हाँ, सो उसमें बहुत सारा फ्लॉस है. उसके बाद वो ये भी करता है कि गांव को बचाने का काम भी करता है. माँ को कुछ हो गया तो उधर भी रिएक्ट करता है, बहुत हार्शली रिएक्ट करता है. सब कुछ है. लीला उसको चाइल्डहुड से जानते हैं वो एक दूसरे से, एंड वो है. लेकिन ये गांव में जो हमें देखा था ऐसा, ये जो लव स्टोरी में इसमें लेके आया था, इट्स अ रॉ लव स्टोरी. ठीक है, इसका जो फिजिकल थॉट्स ज्यादा है इसमें शिवा में. ठीक है, इसलिए मैं वो एक रिजेम्बलेंस जैसा एक पॉइंट पे जैसा आना चाहिए ये करके वो रखा था. Okay, do you want to add anything? I mean, if you want to respond to it. In the sense, like, everybody in the society is grey. Nobody is black and white in the society, right? Everybody has, you can't say one person's head is always filled with positive thoughts. There are negatives in the human, there are negatives and positives. And in the society as a whole, we look at it and you can see that. So that's a representation of Shiva is representing that society. He's not a completely black or white character. He has a lot of flaws in him. There are grays in him. And they know, and this is a very small village. They know each other since they were very small kids. Right. Okay, and they have that affinity towards each other. And like Sir said, Shiva has he's very vocal with his emotions. He emotes everything out, be it as anger, everything. So that was the representation that is being shown. It's not, it's not trying to hurt anybody or anybody's sentiments in a way. It's just a representation of the society as a whole. You can be good and bad. There is both. Right away, there is a character called Murli. Yeah. किशोर सर ने निभाया है वो कैरेक्टर. किशोर सर अभी इधर भी बहुत फेमस है. एक बहुत अच्छा सीरीज भी किया है, शी. सो किशोर सर रिप्रेजेंट्स नेचर. जो प्रकृति हम बोलते हैं, जो वो रिप्रेजेंट करता है. करेक्ट. सो मैं जो हमारा जो ह्यूमन साइड क्या है, लोग क्या चल रहा है. Lastly, now I want to know from you. It started with Kannada, of course, and now
every day we hear that it's releasing in Tamil, and then it's releasing in Malayalam, it's releasing in Hindi, and probably everywhere in different languages. And also, despite all the success, all I can see with my naked eye here is how humble you all are even today. I mean, today I think Rishab Shetty has reached another level. He's well known in the entire country. I want to understand, do you see a change in the way artists down in Kannada industry now are being recognized in the entire country? Because it started, for me, at least correct me if I'm wrong, but I think it started with KGF. And now with this, it's gone to another level. Do you also, I mean, it's too soon, maybe 3 days, 4 days, but do you see a change? नहीं, चेंज तो है, मतलब केजीएफ इस जमाने में केजीएफ वो किया है, हम्बाड़े फिल्म्स आके केजीएफ, प्रशांत नील, यश, एवरीबडी, विजय करगंदूर, एवरीबडी जो मिलके एक मिरेकल किया है. वो भी केजीएफ भी वो लोग जानबूझ के नहीं किए. That had happened. Yeah. Okay. Yeah. So उनका मन में था एक बहुत अच्छा बिग बजट एक मास कमर्शियल कन्नड़ा फिल्म करते हैं. हाँ. लेकिन बाद में जो फुटेजेस देखा, जो कंटेंट देखा, नहीं ये हम देख लेके जा सकते हैं करके एक कॉन्फिडेंस मिला. बाद में KGF 2 तो लैंडमार्क हो गया वो. Yeah, true. It's completely a different ये. So लेकिन उससे पहले बहुत 30 साल 40 साल पहले पहला पैन इंडियन स्टार था वो डॉक्टर राजकुमार. वो भी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में महिषासुरमर्दिनी ऐसा कुछ फिल्म प्रॉपर में मुझे ये याद नहीं है. वो एक फिल्म था, हर लैंग्वेज में डब हुए थे, पूरे के पूरे इंडिया में रिलीज किए थे. एंड ही इज अ लॉन्ग लास्टिंग ऑल टाइम सुपरस्टार. ओके. उन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है, डॉक्टर विष्णुवर्धन, अनंत नाग, आनंद सर इधर भी काम किए थे श्याम बेनेगल सर के साथ, एंड बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स थे. वो लोग का जो फिल्म पुट्टना कनगाल सिद्धलिंगय्या, बहुत सारे डायरेक्टर, शंकर नाग, सो लिस्ट बहुत बड़ा है. ठीक है. उन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन था, वो लोग रूटेड स्टोरी बताते थे. करेक्ट. वो रूटेड स्टोरी का जो फिल्म बनाते थे. सो बीच में थोड़ा कम था, उसके बाद बहुत सारा फिल्म मेकर्स आए, एंड केजीएफ आल्सो. सो अभी मेरा पहला स्टार्टिंग दिन से भी मेरा ये थॉट है कि ये पैन इंडियन कॉन्सेप्ट में मेरा ये नहीं है, ओपिनियन नहीं है, क्योंकि आई ऑलवेज थिंक इट्स एन इंडियन सिनेमा. करेक्ट. विद दैट रीजनल, दैट स्टेट का, दैट लैंग्वेज का, एक कन्नड़ा रीजनल एक इंडियन सिनेमा ऐसा बोल सकते हैं हम लोग. सो वो रूटेड जो स्टोरी है, जो इंडिया में हर जगह वो कनेक्ट होता है, क्योंकि सबका जो सेंटिमेंट्स है सब सेम है. करेक्ट. हमारा जो कल्चर है सब सेम है, तरीका थोड़ा अलग अलग रहता है. True. वो आप लिख देते हैं तो इंडिया में हर 20 किलोमीटर में आपका डायलेक्ट चेंज होता है. That is true. आपका लाइफस्टाइल चेंज होता है. लेकिन सिटी को छोड़ दो, अगर वो जो मूल निवासी बोलते हैं ना, वो ओरिजिनल महाराष्ट्र लोग, नेटिव्स इधर का, इधर मराठी लिया तो आप मराठी में भी इतना डिफरेंसेस है, इतना डायलेक्ट चेंज होता है. कन्नड़ा में भी ऐसा ही है, हर 20 किलोमीटर वो सर्वे बोलते हैं. ठीक है. सो वो चेंजेस होता है, लेकिन पूरा मिलके एक ही इमोशंस. True. But would you be up for doing a Hindi film? I don't know. I don't think much. But say if tomorrow you get a good offer, like a good offer, would you consider it? नहीं, ऑफर तो बहुत सारा दिए बम्बाड़े फिल्म्स में. सो अभी हम लोग विजयना को, बम्बाड़े फिल्म्स को, और मुझे कितने दिन तक, बोर होने तक हम दोनों फिल्म करते रहते हैं. सो ऑफर का यही नहीं है ना, ये ऑफिशियली बोल रहा हूँ, क्योंकि कॉल शीट में बम्बाड़े को दिया है. What about you? Would you consider? Because इतना हमारा जो ये रूटेड स्टोरी लेके जाके पूरी दुनिया को इतना अच्छा तरीके से ये लोग प्रेजेंट करते हैं. This is how producers should do. Yeah. So they will be the legendary producers. True. Their contribution will be like anything in future. Wow. Would you be up for say a Hindi film? You're already doing one though. We promotion में have. You're already at promotion. No, we'll keep this as a Kannada Indian film, like he said. I think that's the best way of giving the respect to the culture as well. So if you have to do a proper, like a Hindi में ही rooted, Hindi belt में ही rooted कोई एक film का offer है, would you be up for it? Yeah, I mean, depends if they want me. I'm sure that you will have a huge lineup of offers. Yes,
but my love towards Kannada is a lot towards my language. But it's not that I won't do it. If I'm given the opportunity, then of course I'm going to do it, 100%. So let's see in the future. I have no idea. I don't know how. I don't even know how my tomorrow looks. So I don't Tomorrow know. looks divine and blockbuster. I can tell you that. But all the very best on that note. I hope that Kantara reaches a lot more people so that we can understand the culture. I think this is the first proper gateway into knowing the entire culture, a different culture of Karnataka, which is great. My friend is so proud. I am so proud of the fact that the story is connecting with everyone. So on that note, all the very best. Would you also want to give us a sneak peek into maybe a Kantara 2 or 3? You know, No comments. No comments. that says a lot. No comments को हम yes ही लेते हैं आजकल. No comments. But thank you so much. Thank you.